Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good afternoon. Today we are going to discuss the biology lecture it for the 11th class FSC part 1. Today we will discuss about the first topic is cell biology. Okay, the cell biology. In the first portion of our book is cell biology. So we will study different structures and different functions of cell. The first topic is about techniques used in cell biology. So before going to the techniques used in cell biology, we should know about the cell theory. As you know, sorry, cell theory. It was formulated between 1838 to 1839. The work on the cell theory, it was way back to Aristotle. अरस्तु से ये स्टार्ट हुई थी जब उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि एनिमल और प्लांट सेल जो है वो एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो एक एक यूनिट पर मुश्तमिल हैं जो इसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर जो है वो सेट करता है. तो बाद में पता चला कि वो जो अरस्तु ने डिफ़ाइन किया हुआ था यूनिट को, वो बाद में उसको सेल का नाम दिया. And then in 1839 cell theory was formulated or cell theory was presented. The first part of the cell theory, there are three main components or three main points in the cell theory. The first point is the living organisms, or the cell is structural and functional unit of life, or you can say that cell is fundamental unit of life. Cell is basic structure and function unit of life, or cell is the fundamental unit of life. You can basic structure and function unit of life. The second point is all organisms consist of single or multiple cells. All organisms, they may have a single cell or they may have multiple cell. सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सेल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. दूसरा पॉइंट है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सिंगल सेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज दैट द न्यू cells arise from the division of existing cells. ठीक है. ये हमारा थर्ड पॉइंट है. दिस इज अवर थर्ड पॉइंट कि जो भी नए सेल बनते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल जो होते हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं. लेटर ऑन ये 1839 लेटर ऑन हमने डिस्कवर किया कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस होता है. एंड माइटोसिस एंड मियोसिस, ड्यू टू माइटोसिस एंड मियोसिस द सेल डिवाइड्स एंड मोर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स. सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट इन. Before going to the techniques, you should know that cell, whenever we study the cell through different techniques, different analytical techniques.
different analytical techniques are used to study the cell, and the cell itself, or the cell organelles, they are studied inside the microscope, and we use and the and in the microscopy we use microscope to study the cell or different parts of the cell. अच्छा, अब एनालिटिकल टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम सेल की स्टडी करते हैं, और स्टडी अभी कौन सी स्टडी होती है, या तो उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी होती है, वेदर वी आर स्टडीइंग इट्स स्ट्रक्चर और वेदर वी आर स्टडीइंग इट्स फंक्शन. ओके, structure or functional study of the cell is done through microscope using different analytical techniques. Before going to the microscope, before going into the electron microscope or into the microscope, you have to separate different cell organelles. For separation, different analytical techniques are used. Okay, for separation, different analytical techniques are used. The first technique is called as cell fractionation. Cell fractionation. The first technique is called as cell fractionation. As you know that fraction, what is fraction? Fraction is some part. पहली टेक्निक जो है वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन है. सेल्फ फ्रैक्शनेशन क्या चीज होती है? पार्ट ऑफ अ सेल, कंपोनेंट ऑफ अ सेल. यू कैन आल्सो से कंपोनेंट, या उर्दू में हम इसको बोलते हैं जुज़्व या हिस्सा. ये सवाल है, हिस्सा. सो सेल को उसके कंपोनेंट्स में या उसके पार्ट्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को फ्रैक्शनेशन कहते हैं. द प्रोसेस इन विच वी डिवाइड द सेल इनटू इट्स डिफरेंट organelles, into different components, into its different parts, is cell fractionation. Okay, so cell fractionation, what is cell fractionation? Cell fractionation is a process in which we separate the cell organelles into its different parts, or we separate the cell into its different organelles or parts, is called as cell fractionation. सेल को उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट करने के अमल को सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहते हैं. फ्रैक्शनेशन इज बेसिकली, व्हाट इज फ्रैक्शनेशन? बेसिकली इट इज separation of the cell into its components is called as fractionation process. Now fractionation process we obtain in two steps. Okay, the process of fractionation, we attain this process of fractionation in two steps. First step is homogenization. And the second is centrifugation. The process of homogenization, and then in second step we do the centrifugation. Okay, what is the homogenization? Homogenization is obtaining or making homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर बनाने का अमल जो होता है उसको हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं. ओके, मेकिंग होमोजीनियस मिक्सचर, द प्रोसेस इन विच वी मेक होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन. ओके, क्लियर है यहां तक? होमोजीनियस एक जैसा मिक्सचर जब हम बनाते हैं उस प्रोसेस को हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं.
आपके पास डेली कोई एग्जांपल है? ज़रा सोचें कि आपने होमोजिनाइजेशन कभी देखी हो या कभी की हो। जूस तो कभी पीते हैं ना, मिल्क शेक, तो उसमें आप क्या करते हैं? फ्रूट्स उसमें डालते हैं, वेदर इट इज़ बनाना और वेदर इट इज़ मैंगो और वेदर इट इज़ एप्पल। जो भी आपका फ्रूट होता है उसको काट के आप उसको डालते हैं। उसके बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, मतलब बड़े पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर आप दूध डालते हैं, तो उसको ब्लेंडर के अंदर मिक्स करते हैं। ब्लेंडर के अंदर मिक्स करने से क्या होता है कि वो एक होमोजिनाइज सोल्यूशन, होमोजिनाइज सा मिक्सचर आपको मिल जाता है। तो वो ब्लेंडिंग का प्रोसेस में आप होमोजिनाइजेशन एक्चुअली कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है उसको क्या कहते हैं? ब्लेंडर। ब्लेंडर, ओके। उस इंस्ट्रूमेंट को या उस इंस्ट्रूमेंट को ब्लेंडर कहते हैं, ठीक है। अब ब्लेंडर में आप क्या करते हैं? जब भी किसी जूस बनाना हो, आप क्या करते हैं? कोई ना कोई एप्पल को ऐसे ही तो नहीं ब्लेंड कर देते ना, उसमें कुछ ना कुछ आप सॉल्वेंट मिलाते हैं या कुछ ना कुछ लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है। उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? जो आप उसमें दूध डालते हैं उसको आप क्या कहते हैं? मीडियम। दैट इज कॉल्ड मीडियम, ओके, दैट इज कॉल्ड मीडियम। अच्छा, अब गर्मियों में क्या होता है? आपको जूस जो है वो ठंडा चाहिए होता है ना, ठंडा चाहिए होता है। तो उसका टेम्परेचर आप किस तरह कंट्रोल करते हैं? आपको फाइनल प्रोडक्ट है या होमोजेनाइज मिक्सचर है, आपको है कि वो मुझे ठंडा मिले, तो आप क्या करते हैं? आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसमें बर्फ़ डालते हैं। उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसमें बर्फ़ डालते हैं। तो जो मीडियम है, ठीक है, जो मीडियम है उसका भी आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ओके। सो यू हैव टू लिव फॉर ब्लेंडिंग द सेल्स inside the blender, you have to use the medium. The medium should have optimum pH, optimum temperature and optimum ionic concentration. Whatever medium you are using, for plant cell and for animal cell, you are using different kinds of. I cannot tell you that this medium you have to use for the cell. So depending on the properties of the cell or the type of the cell, you have to maintain the pH, temperature and ionic concentration of the medium in which you are putting the cell, okay. So you have to maintain the pH, you have to maintain the temperature, you have to maintain the ionic concentration. For ionic concentration, you will study in during your graduate during the next classes, that ionic concentration is important. Sometimes the cell inside the cell is more positive charge, sometimes it is more negative charge. This means that when there is more positive charge, negative charge will enter inside the cell. When there is more negative charge inside and more positive charges outside, the negative charge will move outside. So depending on the ionic concentration, there will be movement across the cell membrane. So the medium which you are using, it should have optimum ionic concentration as the ionic concentration of the cell, okay. Otherwise otherwise the things will move inside or outside of the cell. Now for plant cells, okay, for plant cells, what you have to do, the plant cell is like this one. Plant cells, they are attached with each other through a component. They are attached with each other through a component. That component is called as middle lamella. कुछ ELA लिखते हैं, कुछ ELLA लिखते हैं, लेकिन आप चेक कर लें बुक में जो लिखा हुआ है आपने वही लिखना है। अच्छा, the plant cell, they are attached with each other through a membrane that is called middle lamella, okay, that is called middle lamella. अब ड्यूरिंग दी फ्रैक्शनेशन प्रोसेस हमें मिडल लैमेला नहीं चाहिए होती, तो हम क्या करते हैं? इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए कोई ऐसा मीडियम यूज करेंगे कि ये बिल्कुल ही डाइजेस्ट हो जाए। सो फॉर डाइजेशन ऑफ द मिडल लैमेला इन प्लांट सेल वी यूज
pectinase. We use an enzyme that is called pectinase enzyme to dissolve, to digest the middle lamina in plant cell. In plant cell, we use pectinase enzyme during the process of homogenization. Okay? During the process of homogenization, we use pectinase enzyme in plant cell to remove the middle lamella, and the rest of the process is same. Okay, आई थिंक नाउ अब आपको होमोजेनाइजेशन की समझ आ गई होगी कि होमोजेनाइजेशन वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम होमोजेनाइज मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं या होमोजेनाइज मिक्सचर मेक करते हैं. उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लेंडर यूज होता है. वी यूज ब्लेंडर फॉर द मेकिंग द होमोजेनाइज मिक्सचर एंड द मीडियम शुड हैव ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर एंड आयनिक कंसंट्रेशन. इन प्लांट सेल there is middle lamella. For removal of middle lamella, we have to use pectin enzyme which digest the middle lamella. Okay, this is the process of homogenization. अब जाते हैं अपने next topic की तरफ, centrifugation. Centrifugation. We use centrifugal force during the process of centrifugation. Centrifugal force is used to separate different components of the cell. Centrifugal force is used because you may have known during your physics lecture, there are different forces. Some forces attract things toward its center, some forces repel things from its center. So the same force is being used over here, that on the basis of that force the different components of the cell, they are being separated. Okay, उसके components जो होते हैं वो separate होते हैं during centrifugation process. Centrifugation process is basically the main separation process. Centrifugation is the main separation process. Main separation process से हमारा मतलब ये है कि during the cell fractionation we obtain the homogenized mixture that is not separated. We obtain the homogenized mixture containing all the cell organelles. Then we separate in the next step we separate those organelles through centrifugation, the process of centrifugation. और भी बहुत सारे process हैं वो हम study करेंगे, लेकिन through process of centrifugation we obtain different component of the cell. Centrifugation is basically based on the basically on the basis of density or on the basis of size. Centrifugation या तो density की बेस पे होगी या size की बेस पे होगी. जो इंस्ट्रूमेंट centrifugation के लिए हम यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज. ओके, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज. अब इस सेंट्रीफ्यूज में जो ट्यूब्स यूज होती हैं उनको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स बोलते हैं. सी फॉर सेंट्रीफ्यूज एंड ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स. Or for plant cell or animal cell, we need small quantity of the cell. So for that purpose, we use Eppendorf tube. ये एक छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, इस तरह की एक छोटी सी ट्यूब होती है. इसके ऊपर लिड होती है, एक छोटी सी ट्यूब होती है. कभी आपको दिखाऊंगा वो सेंट्रीफ्यूज भी और एपेंडॉर्फ ट्यूब भी. सो या इंटरनेट पे सर्च कर लें एपेंडॉर्फ ट्यूब एंड इट्स सेंट्रीफ्यूज. स्मॉल, इसका जो सेंट्रीफ्यूज का साइज़ होता है वो भी स्मॉल होता है और ट्यूब्स का साइज़ भी स्मॉल होता है. 1-2 ml इसके अंदर जो सैंपल है या जो सेल कंटेंट्स हैं या सेल कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन. ओके, सो सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज़ बेस्ड ऑन the cell components are separated based on their density or based on their size. Okay, based on their density or based on their size. So if we are separating cell components based on their density, then that type of centrifugation will be called as density gradient centrifugation. Density gradient centrifugation. आप लिख लें आगे. Density gradient centrifugation, and if it is based on the size, then we can call it as differential
centrifugation. Okay, if it is based on the size, then we can call it as differential centrifugation. Okay, now we will study the details of density and differential centrifugation. So in density gradient centrifugation, during the process of centrifugation, what we do, we basically rotate the samples or the centrifuge tubes containing the cell and cell components, the homogenized mixture which we obtain, we put it inside a centrifuge tube. Okay, we put that inside the centrifuge tube. Okay, inside a centrifuge tube. अब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हम इसको रोटेट करते हैं. जब इसकी रोटेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हम इसको रोटेट करते हैं. जब इसकी रोटेशन होती है तो क्या होता है, रोटेशन में चीज़ें जो हैं वो जो ज़्यादा डेंस चीज़ें होंगी वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी और कम डेंस चीज़ें ऊपर आना शुरू हो जाएंगी. सो फॉर एग्जांपल वी पुट दिस थिंग इन द सेंट्रीफ्यूज, दिस centrifuge tube in the centrifuge, and we set the speed around 3000 rpm. What is rpm? Rpm is revolution per minute or rotation per minute. एक मिनट में 3000 दफा वो रोटेशन करेगा. ओके, 3000 दफा वो रोटेशन करेगा एक मिनट के अंदर. आरपीएम पर 3000 दफा. इससे ज़्यादा भी हम करते हैं, इससे कम भी हम करते हैं, बट यू शुड नो दैट वी सेट द स्पीड एट डिफरेंट speeds, but in during density gradient centrifugation we set a constant speed. This speed is constant. We set a constant speed. Okay, we set a constant speed. For example, over here we set the speed at 3000 rpm. By setting the constant speed, after centrifugation we obtain different layers of cell components. Okay, different layers of cell components during density gradient. The bigger one or the higher density one, okay, the bigger one or a higher density one will be at the lower side, while lower density one will be on the upper side. We will obtain in density gradient centrifugation, we set a constant speed. We set a constant speed, constant rotation speed or constant rpm, and then after that, after centrifugation the process, we obtain different layers of cell organelles. The organelles having higher density will settle down, with having those with having most lower density will be at upper position and more higher density will be at lower position. Okay, at lower position it will be yes, like this. More upper, more higher dense will be here, less dense will be here. Okay, जो ज़्यादा डेंस होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो कम डेंस होंगे वो सबसे ऊपर, जो सबसे कम डेंस होंगे वो सबसे ऊपर. इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनल्स की जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स की क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है थ्रू इन डिफरेंट लेयर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज differential centrifugation. During differential centrifugation, it is based on the, as we said, it is based on the size. Now over here, जब आप ये लेते हैं centrifuge, okay, जब ये centrifuge आप लेते हैं, then what happens, आप उसको centrifuge करते हैं. For example, the same 3000 rpm. 3000 rpm पे आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. 3000 रोटेशन पर मिनट पे आप, या रेवोल्यूशन पर मिनट पे आप उसको घुमाते हैं. The higher dense particle or the larger particle will settle down, and
The smaller particle, it will be on the upper portion. The settled down particles, these particles are called as pellets. Okay, and this portion is called as supernatant. This portion is called as supernatant. Okay, the upper portion is called as supernatant and the lower portion, which is settled down, is called as pellet. What we will do, we will take this supernatant and put inside another centrifuge tube. Okay, put this thing into another centrifuge tube and we will run it at higher speed. At higher speed, at higher RPM. Okay, we will run it at higher RPM. In the higher RPM, what you will obtain, the larger particle will settle down and smaller particle will be on the upper side. And then the supernatant, we will obtain the supernatant into another centrifuge tube and separate these the ones which are settled down. Okay, and separate the one which are settled down. So in this way we will separate all the cell organelles. Okay, we will separate all the cell organelles in this way. So we will run this at more higher speed, for example 10,000 RPM. So now you may have know the difference between density gradient and differential gradient. In density gradient, we obtain the different layers of the cell organelles based on the constant speed of the centrifuge. While in differential centrifugation, on the basis of size and different RPM and different RPM, we obtain different pellets. We separate different pellets or we separate different cell organelles and then obtain the final, separate organelles of the cell. Okay, hopefully you understand